Good morning students. Welcome to fourth video of science class 8 chapter 11 force and pressure. Students, in third video of this chapter we came to know about types of force. In today's video we are going to discuss about non-contact force. So let us start. First of all, let us understand about non-contact force. A force which can be exerted by an object on another object even from without touching is called non-contact force. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि जब कोई फोर्स बिना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए लगता है उसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. These are the example of non-contact force. So we discuss about magnetic force. The force exerted by a magnet is called magnetic force. A magnet can exert its magnetic force on iron object without touching them. Therefore, it is a non-contact force. Students, आप बचपन में बहुत सारे मैग्नेट से खेले होंगे. आपने देखा होगा कि कभी कभी मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और कभी कभी एक दूसरे से दूर भागता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मैग्नेट में दो पोल होते हैं जैसा कि डायग्राम में सामने दिखाया गया है. एक है नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल. हमेशा मैग्नेट के जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो जब भी मैग्नेट के अपोजिट पोल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जब सेम पोल्स आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The electrostatic force can be exerted by a charged object on another charged object when they are not in touch with each other. So, electrostatic force is an example of non-contact force. आप में से बहुत सारे लोगों ने जब अपने आप बाल खींचते हो तो ये आपने बचपन में बहुत खेला होगा कि जब आप उस कंघे को छोटे छोटे जो पेपर पीसेज हम उनके पास ले जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो अट्रैक्ट होकर के उस कंघे में चिपक जाते हैं. ऐसा एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है क्योंकि जब आप कंघे को बालों में रब करते हो तो उसमें चार्ज आ जाता है और जो पेपर है वो अनचार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है. इस वजह से जो कंघा है वो उन अनचार्ज पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है और पेपर पीसेस उसमें चिपक जाते हैं. नाउ लेट अस नो अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. आपने एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन, उनका नाम सुना होगा. उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो एप्पल है वो पेड़ से नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है और उन्होंने फाइनली कई ऑब्जर्वेशन किए और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता लगाया कि वो एप्पल नीचे क्यों गिरता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और उन्होंने ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की. न्यूटन सेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स पुल एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. जब आप बॉल को खेलते समय ऊपर फेंकते हैं आपने देखा होगा कि बॉल कुछ समय बाद नीचे की तरफ ही आ जाती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि अर्थ में एक फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है. इसी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, ए फोर्स व्हिच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इज कॉल्ड. योर ऑप्शंस इज ऑप्शन ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ऑप्शन बी कॉन्टेक्ट फोर्स, option C muscular force, option D none of these, and the correct answer is option A non contact force. Question second,
Which one is non-contact force? Option A, muscular force. Option B, frictional force. Option C, gravitational force. Option D, none of the above. And the correct answer is option C, gravitational force. Question third, force between the sun and the earth which hold the earth in its orbit around the sun. Option A, magnetic force. Option B, gravitational force. Option C, frictional force. Option D, all of these. And the correct answer is option B, gravitational force. Question 4. Which force causes all the objects to fall towards the earth? Option A, muscular force. Option B, gravitational force. Option C, frictional force. Option D, magnetic force. And the correct answer is option B, gravitational force. Practice makes perfect. So students, it's time to practice. And your practice homework are on your screen. We will be present soon in the next video of this chapter. Till then, take care. Thank you for watching.